गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबसे आशा है कि ये फाइनेंशियल ईयर FY 21-22 आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहा होगा आप सबके लिए। एंड टू स्टार्ट विद, आई वुड लाइक टू विश यू, ईच वन ऑफ यू, अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ प्रॉफिटेबल न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो FY 22-23। अब आगे आने वाले साल के अंदर वी हैव हैड अ फिनोमिनल ईयर। 21-22 हमारा साल काफी फिनोमिनल रहा है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से अच्छा रनअप रहा है बाजारों के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड के आगे साल, नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हाउ डू वी लुक एट द एंटायर मार्केट, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, कौन से सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर सबड्यूड रह सकते हैं। So we will be having a host of speakers who would be joining us during this conversation. So to start with, Harsh, over to you. Okay, so we are pretty much up from 15,700. We have come up very fast, and there are no sizable pullbacks. So obviously, it's a little bit. I mean, everyone must be surprising that कि इतना fast ऊपर आ गया है market without any pullback, and I think maybe people are expecting some pullbacks, but there is no sign. There is no sign of any pullback, and market is strong. And I will just post one chart in some time after I finish my whatever I have to speak. So we are breaking above 17,430 zone, which is a base formation. I will post the chart in some time after I finish speaking. Then it will give much better clarity what I am speaking. So unless we go below that on a closing basis, say a daily closing, hourly closing basis, I think there is no scope to expect a downside from here unless we go below 17,400 zone. Uh, of course, it's little difficult for me also to accept that okay we are going up without a meaningful pullback. But जो है वो है भाई, अभी हम लोग बस जो भाव है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. अभी पुल बैक नहीं आ रहा तो हम तो नहीं ला सकते मार्केट में. पुल बैक आ जाएगा, मार्केट खुद से दे देगा तो ठीक है, बट अगर मार्केट पुल बैक नहीं दे रहा है, स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली वर्थलेस टू कीप एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक. शॉर्ट करते बैठो या फिर रुको लॉन्ग करने के लिए. सो आई वुड से दैट अगर कल की क्लोजिंग देखते हैं, वीकली मंथली पे तो अच्छी क्लोजिंग आई है, बुलिश हैमर है. तो on a monthly chart obviously we are getting a bullish formation. We need a follow through, a buying and up move. So on upside obviously 17,600 17,800 is a resistance zone. वहां पे थोड़ा सेलिंग आ सकता है, बट एक बार वो क्रॉस हो जाएगा. इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ 17,600 अगर क्रॉस होता है कल विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, देन आई थिंक वील हैव टू एक्सेप्ट के भाई अभी करेक्शन नहीं आएगा और मार्केट ने तेजी पकड़ ली है. So I will be watching tomorrow's close. If it is above 17,600, I will abolish any thought of getting a correction, बिकॉज नहीं आ रहा मार्केट में करेक्शन. अगर नहीं आ रहा तो एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए जब तक मार्केट खुद से करेक्शन नहीं दे रहा. Because the formations are bullish, and of course I will post the chart, then it will be much clear. और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा आया है अप ट्रेंड, बट ऑफ कोर्स फॉर बैंक निफ्टी अभी थोड़ा लैगिंग है एज कंपेयर टू निफ्टी. So for Bank Nifty, I would wait for cross about 36,800, 36,800, 900 zone. Once we close about that, then Bank Nifty will also confirm that okay, we are now getting a bullish trend, and we should be thinking of a meaningful uptrend, न्यू हाइज की हम लोग सोच सकते हैं. तो कल का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए. वीकली क्लोज भी है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है. तो अगर वो क्रॉस होते हैं 17,600 on Nifty and 36,800, 900 zone on Bank Nifty, if we close above that, then definitely I'm going to discard any thought of getting a correction. और else नीचे में जाता है 17,400, 17,360 के नीचे, then okay, then I will have to So, accept that. so Harsh bhai, this is more of a short-term view.
So I have a No, simple and straight question to you. Where do you say index on 31st March 2023? इतना लंबा कौन सोचता है यार, इतना लंबा किसे सोचना है? आई मीन see, I have a thought of 23rd 31st March 23, but इतना लंबा सोच के अभी क्या फायदा है ना? अभी कल की सोचो, तो एक 4 दिन की सोचो ना यार. हाँ, बट वन थिंग इज फॉर मी इट्स क्लियर कि अगर कल 17,600 के ऊपर क्लोज आता है निफ्टी, देन माय व्यू विल बी परमानेंटली बुलिश कि भाई अभी मैं मंदी एक्सपेक्ट ही नहीं करने वाला. क्यों एक्सपेक्ट करूं? बिकॉज 17,600 इज अ गुड रेजिस्टेंस हैज बीन, and if we close above that, and specifically I'm saying that we have a formation, uh, break a broad base, and we are broken above that. So अगर confirmation आता है तो it will be a good rally. It will be of course difficult for many to accept के मार्केट ऊपर जा रहा है विदाउट एनी करेक्शन. मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर है तो है ना, हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते उसको. हम लोग थोड़ी बेच के नीचे ला सकते. So sector wise, I think there will be many sectors. Metals should start picking up. There is a metals में steel sector में already कुछ stock तो already आ गए ऊपर, जैसे कि जिंदाल स्टील है, JSW स्टील है. Maybe Tata Steel and SAIL should start picking up now, if they have to. एंड रेस्ट फर्टिलाइजर सेक्टर में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर में. आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स कमिंग. सो एवरी डे आई थिंक वी विल गेट सम ऑफ द अदर स्टॉक ब्रेकिंग आउट अंटिल निफ्टी का ट्रेंड ऊपर जा रह रहा है, सस्टेन हो रहा है. आई थिंक वी शुड बी लुकिंग एट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स. सो राइट नाउ ऑन माय वॉच लिस्ट इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और क्यों कॉन्कर है, जो मैंने आज चार्ट भी पोस्ट की है बालकृष्ण और कॉन्कर के. अदानी पोर्ट्स है मेरे वॉच लिस्ट पे. आई एम ऑलरेडी लॉन्ग इन दिस, एक्सेप्ट बालकृष्ण. आई एम लॉन्ग इन कॉन्कर एंड अदानी पोर्ट्स. बालकृष्ण आई विल गो लॉन्ग अबाउट 2145. एंड आई विल देयर आर लॉट ऑफ लाइक टाटा कंज्यूमर है, कल ब्रेकआउट आया टाटा कंज्यूमर में. So we'll be getting a lot of stock specific ideas, and I think we should concentrate on stock specific ideas rather than scratching our head on Nifty why it is doing that. So that's my view. सेक्टर स्पेसिफिक ऐसे ऐसा मेरा व्यू तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी सेक्टर में है, बिकॉज लास्ट पेज में भी मैंने बोला था कि 10 साल का ब्रेकआउट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल्टी में भी. So I think these sectors should perform. Another sector is PSU Bank. Obviously चार्ट पे ब्रेकआउट है और मोस्ट ऑफ PSU बैंक का ये सेक्टर में एक्सपोजर है इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी में और मेटल सेक्टर में. तो अगर ये सारे सेक्टर चलेंगे तो PSU बैंक भी चलेंगे. ऑफ कोर्स आई डोंट ट्राई टू कंपेयर, बट चार्ट पे ब्रेकआउट है, सो आई बिलीव दे शुड आल्सो रन. So that's it about my view. Thanks, Harsh. Thanks for the fantastic view. So over to you, Gunjan. Harsh, one question. If you just Uh, have to throw a random number, कि 31st March 23 को अपन कहाँ होंगे? Random number, upside, downside. So purely random, purely random. Nobody knows कहाँ जाएगा. रैंडम नंबर अगर बोलो तो मैं 25,000 का दे दूंगा. आई मीन इट्स नॉट रैंडम, आई हैव अ टारगेट बेस्ड ऑन थर्ड व्यू, बट आई मीन अभी देखे क्या फायदा, 17,800 के ऊपर तो जाने दो यार एक बार. Then if we break above 17,800, then my target is 25,000. So Harsh bhai expecting close to 35% returns in the next financial year. Good to hear. Good to hear. To start with, being it's optimistic. Thanks, Harsh bhai. Please remain on as speaker. Gunjan bhai, over to you. Good to see you on Spaces after a long time. So good to hear from you. Hi. Hi. Good evening, everyone. So, I don't have very long-term targets as such, but yeah, the rally this from 15,800 till now has been. I don't know. I think a lot of people have missed it, because might have missed it, or some entered but exited around 16,500 odd levels. So what's happening is that now, I mean,
I mean, everyone has a view. Like what I'm seeing is most people are either bullish or bearish. I mean, they can, either are expecting a large crash or a large rise. But there's a chance that we might stay in a range for a while. The reason is since 2020, market has given a lot of opportunities to, especially if you see commodities, for example, oil has gone from negative 40 to 130. Still, it's above the 100 mark. So the movement wise it has given a lot of opportunities. There can be a now in the next, I mean, it can, I might be totally wrong, but there's the chance that volatility will contract in almost everything, because we are not out of the woods yet. I mean, if everything is right, why is oil above 100? If everything is right, why are bonds here where they are? As I'm not expecting a large crash from here this year, to be very honest. But there are a lot of ifs and buts. There is a chance that we might stay in a range that can be a large range. By large, I mean 16,600 to 17,900 or 800 on Nifty. Although, as I said, I can be completely wrong, but there's somewhat probability that most of the asset classes might stay in a range. So Nifty has been in a range for a few days. It can break out, it can break down towards 17,000, go to 17,600, 700. Again, I'm not picking anything. I don't have a Nifty position. I exited all my Nifty positions from 15,800 to 17,500. I have some bank Nifty positions open still. But the thing is that there is like I believe there can be some sort of still some sort of consolidation. And I mean, it's a hard question that, and would anyone be making a fresh portfolio here? I mean, because most people were very bullish in Jan and Feb. They were like, portfolios got destroyed somewhat. I mean, mid caps gone 30-40% down, and now market has come back to that same place again. So I mean, that's my feel that market might stay in this range for a while before breaking out. Beyond 1 or 2 months, no one can say because there's so much news flow coming every single minute, every single day. So anything can happen and with markets, but there can be a little bit of still consolidation and then maybe a real move later. As we see, as we speak, S&P is coming down a little bit, 45.70 right now. So a little bit of correction there as well. So not a large correction anyway, around 44.50 maximum. But I mean, right now that's what I think. Crude as well. I think market is in a place where there is price discovery happening. Like with crude, I mean, most people are expecting crash towards 80, 70, 60 levels, but market is not going. So it's a price discovery kind of mechanism. If crude goes up again and stays around above the 100 level for the next 2 quarters, will companies be able to perform that much? I mean, profitability wise, that's the question to be asked. So yeah, I mean, no crash in sight as such right now, but I mean, can it go towards all-time highs? Yes, it can, but maybe after a little bit of consolidation. That's what I feel right now. Uh, one question to you, Gunjan. So basically, I understood what you are speaking because we follow Elliott wave. So basically, you are saying probably this is an X wave and another maybe Z wave should come down. That's your view. What I'm guessing, because you are expecting the range bound, right? Actually, even I had that view earlier. And of course, unless we break above 17,800, I will keep that view in my mind, as you also said, as you are saying that we might go range bound. I So am is more talking like it's not technical. That's why I say I might be completely wrong, but more psychological, because right now we're in a place where half of the crowd is expecting all-time highs. Another half, maybe you can say the percentage might differ. Another half or 1%, one side of the crowd is expecting what do you call a crash. No one is yeah, expecting choppiness, first of all. I yeah, yeah. mean, yeah. So what happens is in that kind of high volatility environment, most people prefer buying calls or puts. Market has been very kind to option buyers in the past few months, weeks, 2 years, but in between there are, but if you know about volatility, when it reverts, the reversion part on the downside, it stays there for a while. So there might be like the option sellers market coming
for the next, we can say 2 3 weeks or maybe 2 3 months. You don't know. Again, it's just a guess based on, everyone is guessing here. We all are. We don't know what will happen tomorrow, but there's a chance, slim chance of, I mean, psychologically, that there's still a little bit of choppiness left. I'm not saying it will last like a couple of months, or it can be 2 to 3 weeks maybe. So let's see what happens. Yeah. I agree with your view. Even I had that view. I just changed my view because I mean the market is just not giving any correction. But Yeah, of yeah, course, it's going we up have to. like, it's going Yeah, up yeah. like Of, anything. I mean, that's with every market. Like, yeah, and yeah. but Exactly. there are some things which we can't ignore. We can't ignore the bond market. We can't ignore inflation. These are still there, and because, and inflation is not going to go away just because the war in Ukraine goes away. It will be, there are long term supply issues that are there. So how markets, pro companies, consumers, and overall demand copes up with that, and so that will be something to watch out for in the coming few weeks to months. Yeah, sure. Of course. So I do agree with your view too. But with like, of course, we need to get a downside to for your view to come down. True. Yeah, somewhat down. I mean, I'm not right now. There's no sign that it will go under 17,050, 17,100, which anyway 300 400 points is not a bad correction. So if Yeah. last when I spoke, I was expecting like choppiness in a way that there will be 300 400 point moves in the market, and that's what's happening. Bank Nifty right now is not performing the way it should have. That's the main traded index, and the moves are just like 300 400 points. It goes up from 17,100 to 500, comebacks to 200 300. So the thrust is getting smaller and smaller. Yeah, eventually it will break up or break down, we'll see. But let's see how long this choppiness lasts, because uh, options are still very expensive in a way, because people are buying them, and they have in the past made money out of them. So how long will that last, we'll see. Fair. Thanks. Hello. Yeah. So we all are missing on a one angle, which could actually drag the markets down, is the Fed rate hike, where Fed is talking about almost 200 basis point of rate hike, which is expected during this financial this by end of the year, is what the expectations are. So, what would be your take on in event of the extreme rate hikes which happen? What do you see any downside level needs to be watched out to be protected, below which everyone becomes bearish? There's a very good paper in which they say that there are times that has happened 2 times that even in high inflation, or when Fed starts hiking, and when they hike quite aggressively, still Gunjan, we can't hear you. Gunjan? I think I he think we lost. lost it. Yeah. Okay. So we have Shiva Seni as a speaker. Shiva, would you like to speak something? Sandeep, I'm accepting your request. So today we are open to the forum. People can come and give their views rather than we giving our views. Let's hear from the general public what they have to say about the markets and what are their views. क्यों अमित जी Uh, क्या कहना है आपका? Yeah, definitely. Vishal. हाँ So जी हर्ष भाई. So basically, to answer your question, for Fed rate, so basically, I'm more of a technical guy than a fundamental. So if I have to discard my bullish view, probably 17,000 is the level below which I will discard my bullish views. But unless we break below that, I will not discard the view.
Yeah, it can. I mean, again, it can go to 18,000 odd levels. As I said, there's a great paper that it has happened in the past. It's not that we are saying it in the first time. I think it was 19 some years 1980s or sometime. I'll share the paper anyway. But yeah, that can happen. But because market prices everything, so market is pricing in. So S&P, the main index, is still up at 4,600, 200 points away from all-time high. We are still away from our all-time highs as compared, I think, percentage-wise. But S&P is there only. So there is a chance that S&P might hit 4,800, 4,900 once and then crashes. So there are a lot of things, but anyone who's building a portfolio for a trader, it is easy because he has a stop loss. He can, if he is nimble footed, he can exit and enter pretty fast. But for anyone who is building a portfolio here, these are some kind of things that one has to think about, that I'm building my portfolio at 17,600, and what's the upside I'm looking and what's the downside I'm looking, and the factors that are still not gone away. We can look away, we can think, we can stop thinking about them, that's a different thing. But these factors are still there till the supply lines are back to normal, till crude oil prices, because as you know, crude oil affects everything almost. So till that comes to normal, by normal I think I can say 30%, 20, 25, 30% under it, as we are in price discovery stage. So price discovery can be 100, can be the new normal, we don't know that. So in that scenario, are you very much, as an investor, very much as Harsh said, that I mean, we can, as a trader, you have a stop loss, so that's not a problem, in a way that you can design your position sizing accordingly. For an investor who hasn't got a stop loss, is this the right price to enter? That's what one has to think about, because if you see the anchor, few weeks back we were for 15,800, and so if that is the anchor point, as an investor, again I'm saying, are you comfortable building your portfolio? Are you going to buy in tranches till what, 14,000, if that comes? So some questions for investors. Traders, we can change our view in the morning depending upon the market data. So that's a different story altogether. So Yes. I'd like to add. So can I go ahead, Vishal? Yeah, Amit bhai, please. के परमिशन लूँ राइटिंग में? नहीं नहीं, आप हम हमारी तरफ से बिल्कुल अनुमति है आपको, हमने आपको इजाजत दी, आप बोलिए. Don't act like those TV jokers, yeah. Okay. So my point is, see, जो हर्ष ने explain किया, मेरा भी वही point है. Take a lower range of 15,600, upper range of 18,600. Till that range is going on, we don't know where we are headed. The moment this range gets broken out, take 3,000 point on the upside, take 3,000 point on the downside on Nifty itself. So probably 21,600 odd to 22,000 odd is what I'm looking on the upside. If it so happens that we have a decisive breakout above 18,600, if it so happens, otherwise वही रेंज में घूमता रहेगा, 17,800, 17,900 या मैक्स 18 गया, वहां से वापस पुल बैक आया, नीचे 16,800 रिटेस्ट करेगा. बट इस बार जो स्ट्रक्चर का चेंज हुआ है, दिस टाइम द व्हाट स्ट्रक्चर हैव चेंज्ड इज दैट वी हैव not made a new lower we have not made a new lower high. Okay, this time structure is that we are making higher lows and we are making higher highs. So if you consider it in simple price action terms, the structure have changed, which was not happening right from say October onwards. From October onwards, what was happening was we were having lower highs and lower lows continuously. For first time in this March month, we have changed the structure. So to think about that market will go crash, see, have a bigger stop loss if you want to have a bigger play. If you want to have a, say, intraday traders, we don't mind losing 100 points. Because if we see 200 point kind of a move, I won't mind even taking a 50 point stop loss. So you need to. अमित जी, आवाज चली गई आपकी. हर्ष, can you hear Amit bhai? No, I cannot hear him. I think we Okay. Vishal, now audible? Yes, you're now audible, Amit bhai. तो गाड़ी कहाँ अटकी थी? हेलो, बस गाड़ी अटकी नहीं थी, आप शुरू कर दीजिए जहाँ आप की आवाज अटकी थी. और मुझे क्या पता कहाँ अटकी थी? नहीं, so you were talking about the broader range. Yeah. So point again and repeat. Take smaller stop losses or higher stop losses. That's what you were saying.
संदीप जी, आप माइक म्यूट करोगे 2 मिनट के लिए? So Sandeep ji is saying that you are talking about higher stop losses and higher highs and Yeah, I was talking about the structure of the market, the structure, the price, simple price action. मतलब जो the most basic technical analysis I'm talking about is that the structure of market since October have changed for the first time in this month of March. We have been making newer higher highs and comparatively newer higher lows. Just check what the structure is. Whenever we have made a low, we have not breached the previous lows, and we are making newer higher highs. Means the previous highs are getting taken out, and market is settling on those prices. It may be book cooking that might have happened today. Book cooking might be over today. So what comes in the next week or 10 days, we should focus on that first of all. What again price is trying to tell us. If prices have to go down, probably 17,800 is the max where I see, plus minus 100 point, and from there market can reverse to say 17,000. So let's take a worst case scenario of 16,800. Unless those prices are broken, probably we are headed much higher. Second point is that volatility. If you see the VIX index have fallen all the way. Now it is somewhere at 20 levels. So if it comes down below 18 levels, be comfortable on your longs. You can carry overnight longs also if it so happens that it is below 18 levels. See, what we consider as 18 to 24 level is that we are bit of volatile, not too much of volatile. So if we happen to be in those kind of market scenarios, it is much better to go long. Sit on your longs. You can carry your overnight positions. You can create portfolios. You can calmly carry on your positions. There's no need to worry. Unless, see, what will happen tomorrow, nobody knows. What kind of this development will happen between Russia and Ukraine, nobody knows. None of us are geopolitical experts. Whatever we talk, we see it on TV and try to explain it. हम सब भी वो टीवी पर ही देखते हैं या नेट पे कहीं पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इससे ज्यादा हमें भी अक्ल नहीं है क्योंकि हमने कभी कोई ऐसी लड़ाई देखी नहीं. तो हम भी सब वही चीज देखते हैं जो आप देखते हो. तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये सब भी अगर हो रहा है और उसके बाद भी प्राइस हाई जा रही, मतलब मार्केटिंग एक्सेप्टिंग अ फैक्ट कि दिस वॉर माइट प्रोलॉन्ग ऑल्सो. हो सकता है 4 महीने और ये चलता रहे. जब तक वो कुछ नया स्टेप ना ले, जब तक अनलेस पुतिन टेक्स अ न्यू स्टेप एंड डू समथिंग डिजास्टर्स, till then I don't think we should be worried at all. And talking about crude, that might affect us or not, nobody knows. Because crude and Nifty have a positive correlation if you go and check the history of the charts. So, and considering one more thing is, what will happen when the Fed hikes 7 times? See, basic Dow theory, which was written almost 125 years back. Basic Dow theory says that market tries to discount everything. So we are probably discounting those 7 rate factors also. As Gunjan said, if market had to fall on those 7 price hikes news, you Vishal mentioned 200 basis point. If market had to fall, market would have fallen. So market is trying to discount those factors when S&P is almost close to life highs, almost close to life highs. Now from there where it goes, nobody knows, because there will be uncharted territories. We might apply FIBOs to get 1.61 ratio. It might go there, it might go there. So there is no hard a perfect answer to it. There is no reliable answers to it. We need to see what is happening to the prices. So as per me, probably on the upside 22,000. If 18,600 gets taken out, on the downside broadly 12,000 if 15,600 gets taken out and it stays below 15,600. Because previously that 15,400 to 15,900 was a very broad band in which market was there for quite some time. I don't remember the exact time, but market was there for quite some time. So market have retested that thing and now it is again pulling back up. See, we have all kind of bad news is possible. All kind of bad news possible. Still market have not crashed. As predicted, market will crash. Market will crash. The day it want to crash, it will crash without informing any one of us. It will not come to our door and knock. Okay, boss, I am going to crack. You create your position. If you feel market is going to crash, go and buy a December 15,000 put. If you feel market will go to 22,000, go and buy a December call. December calls are active. Go and buy a December 22 call and sit on your positions. If you want to hedge yourself, do the reverse. Short a 20, rather than shorting up put, better short a higher side call of a long dated options. That's it, Vishal. If anything comes in my mind, I'll add to it. Yeah, Sandeep, go ahead. Thanks so much, bhai. Yeah, Sandeep bhai, you have been raising your hand. Please go ahead with your query.
Thanks, Amit. Thanks, Vishal. What I wanted to say is, market for to fall the market to have a very substantial fall in the market will be priced in. There is no trigger as such. We have a political stable environment. We have a stable government. We have a very decisive government, which is a very good plus factor for market to stay in an up move range. But having said that, mother of all the bull runs, we have seen that. Now that might not continue. It is true that markets are designed or indexes are designed only to go up. Index inflation factor in करेगा, inflation will indexes will only go up. जैसे bank nifty or their components would change. The more moving or the more weight candidates would be brought in, the weaker candidates might be taken away. So index are by default designed to move up. So there is no shadow of doubt. But having said that, this entire year we have seen a very hockey stick kind of an up move in last couple of years, at least last couple of years or 3 years now. So what my estimate is, my understanding of markets is, this year would remain in a range. This would be the year of consolidation because next year we would have elections. So this year it would remain in range with all factoring on. It would be a news-based year. Earning seasons would get a re-rating. All the companies would get a re-rating based on their market margin shrinkages that would come in, and from quarter two, earning season quarter two, we'll report financial year now, quarter one and quarter two. Quarter two onwards, you'll not see. You'll rather see on everybody or analysts giving out a re-rating to all the companies on a with a little bit of a hold or an underweight kind of a scenario. So markets might remain in a range bound. I agree with Amit that you can take a 3,000. It will remain in a 3,000 plus zone from here to 3,000 minus zone from here. That's the broad range for Nifty perhaps. But yes, also a little disagreement to Amit's point is market. If you look at Bank Nifty very particularly, Bank Nifty had made a lower lows instead of higher highs. So last time it crashed, it touched 34,000, and last time it touched 34,000, and this time around when it dropped, which was a one-off very substantial drop that came in, it touched 32,000. So it is rather under stress, and without support of the banking, things will look very very difficult to take the inflation or indexes higher. Sandeep, Bank Nifty carries a weightage of almost 27% in Nifty itself. So unless Bank Nifty moves, so it is very hard for Nifty to move in a particular direction unless IT outperforms or some other sector outperforms altogether. Absolutely, Amit. Also, Amit, you might not disagree. Every business has a life cycle. For example, Infosys, Wipro, HCL. I happen to be an HCL, so I understand. HCL is going through its last cycle where a promoter is on the last stage. So and the next generation is not as equipped or as I would say hardcore as the promoter was. So similar is for Wipro. So they are on a maturing rather declining trend. So IT is on a declining trend. Banking we have seen unless and until the industries pick up, there's no loan growth, and auto sector is the main key driver or perhaps a largest indicator of how an economy is performing. Unless and until we start seeing on those angles, perhaps it won't give us any triggers to start investing in cash or picking up a portfolio in cash. That's my view. I mean, I may be grossly wrong. We all have the right to go wrong, but we should know how much wrong we are when we are losing and how much how much money we are making when we are right. As simple as that. अमित जी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं कुछ I would like to add few things. फरमाइए आप भी. धन्यवाद धन्यवाद. So Sandeep, I agree with you and with Gunjan, Harsh, everyone, Amit bhai. So for me थोड़ा सा ये है कि index is just a number and majority of people look at index as a number and they miss out on the broader market, and there are enough and more sectors in the broader market which would definitely outperform the markets, and one should focus on those sectors as well.
I mean, there is a huge demand supply mismatch in a lot of sectors, especially the agri commodity space, I would say, or probably the metal space. So there are enough and more sectors where people will definitely get opportunities. I mean, just if you are talking about numbers, we are a 140 crore population growing economy at a 8.5-9% year on year. So growth is there, bound to happen irrespective of जो भी hiccups आते रहेंगे, but growth is bound to happen. Now, just to add on what Sandeep was talking about, historically अगर हम पिछले एक decade last decade की अगर हम बात करें, तो two sectors which have majorly three sectors I would say which have majorly performed are, one is the banking sector outperformed, is one is the banking sector. The second one is the construction and the real estate sector, and the third one is auto sector. Now अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें अमित भाई, तो आप एक चीज नोट करिए, अबाउट 10-15 years back the access to capital, credit capital for these sectors was not easily available. अगर हम बात करें आज से 15 साल 20 साल पहले, बिल्डर्स को पैसा मिलना बड़ा आसान नहीं था, या किसी को घर लेना होता था, लोन लेना होता था, इट वाज नॉट इजी, इट वाज अ वेरी टीडियस जॉब. तो द बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन जब हुई ये सेक्टर के अंदर, तो एंटायर वैल्यू चेन के अंदर, बी इट द रिटेल एंड यूज बायर, होम लोन बायर और होम बायर और द डेवलपर, सबको एक्सेस टू कैपिटल मिला, जिसकी वजह से इजी क्रेडिट मिलने की वजह से सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई. या ऑल्दो कई लोगों ने उसका डिसएडवांटेज, वी हैव हैड इनफ एंड मोर स्टोरीज जहाँ पे companies have gone bust as well. So let's not talk on the negatives today. But yeah, so there was a financial inclusion, and because of which the sector grew like anything. Second, similar thing happened with the auto sector. About 2 decades back, owning a car was a luxury. Today, it has become a necessity. Now, I mean, and गाड़ी का लोन लेना हो तो आजकल तो बैंक अकाउंट आप लॉग इन करो तो प्री अप्रूव्ड कार लोन्स लोगों को मिल जाते हैं. So it has become the access to, again, the access to capital, access to credit on the auto sector has become so easy that इसके चक्कर इस कारण से the sector has grown like anything. The similar thing is happening. It has already started happening in the entire agri sector. If we talk about some numbers, about 60-63% of Gunjan would agree with me on this. If he's around, around 60-63% of India's population is dependent on agri business. But अगर हम GDP की contribution की बात करें, तो agri sector only contributes to around 16-18% of the total GDP of Indian economy, Indian economy. Now, with a lot of traction on the agri sector, the financial inclusion, given that I am also from the agri sector, तो I am giving you the ground reality. यहाँ पे पूरे सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अमित भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए access to easy capital and credit is coming. तो यहाँ पे भी this is one sector which I would say क्या कहते हैं would definitely have a growth perspective. Hello. तो वही है. Yeah, Harsh, go ahead. Yeah. So basically the एक कहा था कि पोर्टफोलियो बना सकते हैं क्या, तो आई वुड से कि निफ्टी देखते बैठेंगे तो पोर्टफोलियो बना नहीं पाएंगे हम लोग कभी भी, क्योंकि इफ वी एक्सपेक्ट के करेक्शन आएगा, और करेक्शन आया ही नहीं और निफ्टी गया 18,006 के ऊपर गया, तो फिर हम लोग सोचते रहेंगे कि अरे यार अभी इतना ऊपर आ गया है तो अभी रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं मेरा. तो पोर्टफोलियो बनाना है तो स्टॉक देखो, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे ब्रेकआउट आ रहे हैं ब्रॉड बेस के. So of course, and you don't have to deploy 100% of your cash at a given time. You can start taking small bets. क्योंकि index is just a heavyweight, a representation of heavyweight. Honestly, मुझे नहीं लगता कि index पूरे market का represent करता है, because I have seen, as far as I have seen the index and the overall broader market,
मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि इंडेक्स कुछ अलग कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट कुछ अलग कर रहा है, कुछ स्टॉक कुछ अनाप शनाप भाग रहे, कुछ स्टॉक कुछ अनाप शनाप गिर रहे हैं। तो इंडेक्स देख के तो मैं डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकता कि पोर्टफोलियो बनाओ कि ना बनाओ। हाँ, इंडेक्स का लेवल अगर मुझे देखना है कि पोर्टफोलियो बनाना है कि नहीं, तो वी हैव कम अप वेरी फास्ट, वी हैव कम अप वेरी फास्ट अबाउट द रेजिस्टेंस जो 16800 था, 17000 था, और नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो नीचे जाने के डर से अगर हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे नहीं अभी, एटलीस्ट कुछ तो 10-20-30% डिप्लॉय नहीं करेंगे, तो हम लोग कभी भी डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो इंडेक्स देखने से अच्छा है कि स्टॉक स्पेसिफिक देखो, रिस्क रिवॉर्ड देखो, कितना डाउनसाइड है, मैं कितना रिस्क बेयर कर सकता हूँ स्टॉक में, ऊपर में कितना लग रहा है मुझे, अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड, तो पोर्टफोलियो बनाओ, थोड़ा डिप्लॉय करो कैश। अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू मेक अ पोर्टफोलियो थिंकिंग के इंडेक्स नीचे गिरेगा। दैट्स इट। I'm done. Ankit bhai, we would love to hear your views also on the markets and where do you see the index going forward. And Amit bhai, I won't be available for next 10-15 minutes, just tied up with something. So Ankit bhai, over to you. या थैंक यू विशाल भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को लगता है 16700 टू सॉरी 17700 टू 17800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो आज निफ्टी 17464 पे बंद हुई है, तो और लगभग 250-300 पॉइंट रैली आ सकती है। बट ये 250-300 पॉइंट्स में स्टॉक्स ज़्यादा चलेंगे, तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा रहेगा। निफ्टी इस 17700 से 800 के जोन में थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। एक करेक्शन भी आ सकता है यहाँ से, तो कोई बड़ी बात नहीं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। इंडेक्स पे आई थिंक कुछ मेजर नहीं है बोलने को। रेंज बाउंड टू थोड़ा अपवर्ड बाइज ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो मुझे अच्छा लगता है, दो स्टॉक जो मैंने खुद आज बाय करे हैं, वो है एक पेज इंडस्ट्रीज, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, पोजीशन मेरी है। तो पेज इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है अगर आप आज के लो के आज का लो था आई थिंक 42,000 कह रहा हूँ, तो पेज इंडस्ट्री आप ले सकते हैं, और टारगेट रहेगा अराउंड 46,000 का, और 46,500 का, और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 42,000 का। तो पेज इंडस्ट्री अच्छा लगता है एफ एंड ओ स्पेस में। और जो दूसरा स्टॉक मैंने आज बाय किया है वो है एस कंस्ट्रक्शन, वो अराउंड 236-237, तो अभी 240 भी बंद हुआ है, तो आप भी 235-240 की रेंज में आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो जो मैंने रखा है 223 का, और टारगेट आप इसमें नया हाई अराउंड 280-290 लेवल्स देख सकते हैं। तो इंडेक्स पे ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी रहेगा। Ankit, any views where this year might head towards a longer term view, say for a year, 6 months to 9 months kind of a view? इंडेक्स पे Index stocks, whatever you are seeing, कि 6-8-9 महीने के लिए। हाँ, इंडेक्स पे अगर आप वीकली चार्ट देखें, जो कि कल वीकली क्लोज आएगी, तो अगर आप देखें ये फ्लैग बना रहा है, और वो फ्लैग के नीचे एक आई थिंक 7 मार्च वाले वीक में अगर आप देखें तो वो उसके नीचे गया था। अगर आप दो हाई जो स्विंग हाई हैं, 18 अक्टूबर का हाई, 18 अक्टूबर जो वीक क्लोज हुआ था उसका हाई, और 17 जैन का हाई अगर आप करें और नीचे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये एक फ्लैग बन रहा है जिसके नीचे निफ्टी जरूर गई थी, बट फिर बाय द टाइम वीक क्लोज हुआ तो एक बुलिश इनगल्फिंग बन गई। तो जैसे ही 18,200 300 का जो वो फ्लैग का अपर एंड रेजिस्टेंस लाइन है, अगर वो क्रॉस होता है, तो ये फ्लैग का टारगेट ही आप 2000 पॉइंट का ऊपर देख सकते हैं। तो अराउंड 20,500 का मुझे ये टारगेट लगता है, क्योंकि वॉर में जितनी भी नेगेटिव न्यूज आई
अब वो सब मतलब और अगर एस्केलेशन नहीं होती तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट अगर आप इंडिया विक्स भी देखें वो भी नीचे आ गया है। तो चार्ट्स कभी मतलब चार्ट्स डोंट लाई, एंड अभी इंडिया विक्स 20 आ गया है, तो अगर ये और 18-16 डिप हो जाता है तो आई थिंक इफ फियर लोगों में नहीं रहेगा, कोई फियर इंडेक्स ही बोलते हैं इसको, तो मेरे हिसाब से अगर 18,000 18,300 क्रॉस करेगा तो मुझे 2500 लगता है निफ्टी पे। Yeah, Sandeep, you want to add something? Yeah, just wanted to add here is earning season में हमें earning season जैसे ही start होता है, we all know that earning season में December में भी earning season में FIIs went on a holiday क्योंकि DIIs is waiting for the SIP money to get to come in. LIC wait कर रहा था premium money to come in so that DIIs can start buying the season. तो उस time पर it's very natural for VIX to come down to 16 odd levels. So war is not discounted, I would say. Only thing is the weights have shifted to earning season, even in global, even in US or across the globe, because that's a more relevant event right now than war. Of course, war is at the back of the mind. War is not going away. The implications of war are far lasting than this. So the temporary skew that has come in the VIX is only because of the seasonality of the earning season, start of the earning season. So don't get deceived. It might be a very, very fierce bear trap. Can you repeat what you said in the last? Sandeep, last में क्या बोले? मैंने कहा है it may be a very, very fierce bear trap. Because अब तक हमने hockey stick mother of bull markets देखा है. It is a consolidating zone. So people, the bigger institutional players are playing from their profit, while retail investors have just seen that increase, are playing from their food capital. So बेचारे फिर तो poor retailers रहे हैं. Rest everybody is pretty much playing to the profit, or managing their margins from the profit. Or one good stock ideas. The only stock idea, or perhaps the only area that I am buying is liquor industry and ethanol related stories. So reason why I'm slowly and steadily accumulating liquor stock is जब कोरोना हुआ था or the corona period happened, what I saw was लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए और दवाइयों के लिए इतनी लाइन नहीं लगा रहे जितनी ठेके पे लाइन लगी हुई है. तो what is more important? So once the corona period goes away, people will line up against, outside the bars or inside the bars. So Radico Kheta, Global Spirits, GM Breweries, United Beverages, I think they will start skyrocketing because they have a huge monopoly. Rest all, people might you get consumed in the cyclicals and these IT industry or glamorous stocks. But yes, definitely, this is what I'm definitely accumulating. Thanks. Yeah, Ankit, you were saying something. Ankit, you there? Yeah. Yeah, you were adding on to something. No, just was giving my nifty view on weekly chart, as you said. Nothing much to add on there. Komal, what are your views going ahead? Komal, you there? So one thing I like to agree with Sandeep is that people, when it was purely lockdown, people bought liquor at 3x or 4x the normal rates. And people have started queuing up in the bars, in the pubs, because people have been tied down in the home for last 1.5 years, 2 years almost. So now they cannot be stopped altogether. And now since in Maharashtra and Mumbai, from 2nd April, all the restrictions of COVID will go away. So people will not even wear a mask. But I'll again request everyone to wear a mask. Let's make it a habit to wear a mask.
what should I say? One thing is that you will not get airborne diseases, first of all. Then it will at least reduce the pollution that we intake. So at least on that part, masks are useful. That's it's up to you. It's your life. We need to decide what it is. Yeah, Komal, go ahead. Yeah, I think very good point, Amit, on mask. I think बड़ी मुश्किल से हम सब ने मास्क पहनने का हैबिट डेवलप किया, and very well said कि pollution में it is gonna help, especially people who आजकल डस्ट के वजह से बाहर इतना pollution, इतना डस्ट, इतना construction. A lot of people I have known personally, their lungs are being affected because of the dust and pollution outside. So let's maintain this habit of wearing mask going forward as well. And I think other than this, like markets, so largely what Ankit sir said, or trendonomics and Sandeep, and what you shared also, I think largely it is in sync with what I also think. Um, but the only I don't know if someone already spoke about the inflation and overall what is happening around in the world in terms of purchasing power and all. So that is the only thing which is always going to be in the back end impacting the markets across the globe. Uh, am I audible, Amit? Yeah, you are audible. Komal, go ahead. Okay, yeah. So I think we have Amarjeet who wants to ask something to the speakers. Amarjeet, please go ahead. Anyone have any request, do send me. I'll accept the request. If you're not able to join in as a speaker, exit the space, close the Twitter app, again join back. Otherwise, I'll end this in next 10-15 minutes. Because whatever points needed to be covered, we have already covered all those points. Yeah, Amarjeet ji, boliye. Can you hear me? Yeah, you are audible, Amarjeet ji. अमरजीत जी आप ऑडिबल है, बोल सकते हैं आप. Amarjeet, sir, we can hear you. Please go ahead. Amarjeet ji, unmute कीजिए and you can go and ask or share some of your views. And if anyone have any questions, do send me a request. Otherwise, close the space in next 10 minutes. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अमरजीत जी आ रही है. ये आ रही है, बोलिए आप. I think some issue with his end in internet. Amit, we also have Kaushik here. If we can add him as a speaker. Already done. Anyone have any requests? Do send in as soon as possible. Because people have a query that we don't entertain questions. We always entertain questions, but people don't come up ahead. If you have a question, if you have some of your sharings about market, any stock specific things, do join in, please. Friends, one thing I think Amit has been religiously doing these spaces every day. He takes out an hour and a half every day, and this is a very open space. ऐसा कोई specific speaker, specific host नहीं है. It is open for all. Everyone can speak, can share their views, can ask questions. Let's make it more interactive going forward. हेलो, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो. हाँ अमरजीत जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप. हेलो. अमरजीत जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं. Komal, Ankit sir, kindly tell me, can you hear me? Yeah, Ankit is there. Yes. Okay. Tell me.
No reply. Yes, sir. So please ask your question. Ankit, I think he have some audio issues. Connectivity issue. हाँ. कनेक्टिविटी ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं. ये हर जगह प्रॉब्लम ही है यार, कितना भी कर लो ना. ये ऑडियो इश्यूज जब आते हैं ना और नेटवर्क का इशू आता है ना, मुझे लगता है रिलायंस, भारतीय आइडिया सबको शॉर्ट करके परमानेंटली बैठ जाओ. इश्यूज तो रिजॉल्व करते ही नहीं है लोग, सिर्फ प्राइस बढ़ा I have देते. a question on four companies, a little more stock specific. One is two are fertilizers. One is GSFC, GNFC, a chemical company called Gujarat Alkalis, and two banking companies, PNB Home Finance and IDFC. Any idea on these? Yeah. Ankit, you track GNFC, na? Yeah. For anyone, because So I only track fertilizer- Nifty, Bank Nifty. Fertilizer space is looking good. Be it GSFC, बहुत देर से GNFC. कोशिश कर रहा हूँ बात हो पाए. अमरजीत जी 2 मिनट के लिए म्यूट रहिए, 2 मिनट के लिए. उसके बाद आप अपना, जब मैं आपका आवाज आपको बुलाऊं तब आप आ जाना, ठीक है? तब तक 2 मिनट के लिए. या योर माइक इज ऑन. या यू आर ऑडिबल. पूछिए आपका क्वेरी पहले. कोई रिप्लाई नहीं है, क्या है ये? सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ. आई थिंक यू हैव सम ऑडियो इश्यूज. अंकित सर कुछ बता पाएंगे? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है. बोलिए अपना, आप पूछिए अपना सवाल. चलिए. अमरजीत जी आपकी आवाज सब सुनाई दे रही है, आप बोलिए आपको क्या बोलना है. उनका डिस्कनेक्ट ही हो गया. Yeah, Ankit, there was query about GNFC, and the three other stock. PNB Housing. So fertilizer space is looking good on charts from a medium-term perspective. GSFC has made a new all-time high this week. GNFC was already moving from strength to strength. I think it moved from 400 to 800. So you can avoid GNFC. It is looking overbought on weekly chart as well. So GSFC is better because GNFC has already done a 2x move in. सर मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है. अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों की भी मुझे कन्वर्सेशन सुनाई दे तो कुछ अच्छा होगा. सर आप अपना सवाल पूछिए. अंकित, आई थिंक दे हैव सम ऑडियो इश्यूज. अमरजीत जी के कुछ ऑडियो इशू है. हेलो. इसके लिए इज नॉट एबल टू. अमरजीत जी आपकी आवाज आ रही है, हम सब सुन सकते हैं आपको. आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कीजिए तो हो जाएगा. हेलो. अमित, वो हमको नहीं सुन सकते. So, आप कितना भी बोलोगे he will not be able to. हाँ, वो absolutely agreed. हेलो. Ankit, you go ahead. So GSFC is much better than GNFC considering the risk reward is favorable in GSFC. If you look at RCF in a fertilizer space, it is also looking good. It is on the verge of a 20-year breakout. So if it sustains about 9500, 95 to 100 resistance zone, it will be a 20-year breakout on RCF. So fertilizer space is good. Gujarat Alkali, one more stock which is close to all-time high. So Gujarat Alkali, you can keep if you are long, you can keep a stop loss of 800 or 800 to 820. Exact level will be 810. So you can keep a stop loss of 810 and continue your positions because it is still making all-time high.
and it has given a good close this week as well. So all these three stocks are looking good. I would also agree with Ankit Bhai on Gujarat Alkali, GSFC, and other one RCF, because all the three stocks are breaking out of broad base. So I think they are good until they are holding above the bases. Like Ankit said, 800 for Gujarat Alkali, and for GNFC, the base is 150. I guess. Let me check the chart. Yeah, for GNFC, sorry, not GNFC, GSFC, sorry. For GSFC, the base is around 150, and the RCF recently breaking out. So definitely, I would also prefer these three over to the GNFC one, which is already a little bit overbought. And वो PNB housing से पूछा था, तो currently the stock is weak. So unless it starts going up, I think it's avoid PNB housing. Harsh, if you have any What queries. about Yeah. IDFC? That's another one I just wanted to know. Thank you. Hello. So I am audible. Ankit, you track IDFC? Harsh, Yeah, just a minute. IDFC, there is a lot of resistance zone between 70 to 75. So whenever the stock comes closer to 70 odd level, it starts facing there is selling coming in at around 70 level. So let it cross 70-75 zone, then it will be a big breakout on the weekly, even monthly charts. So wait for 70-75 to cross to buy, because it is continuing in a range of 70, and on the downside 50 to 70 is a broad range. So wait for the stock to cross 70-75 to enter. Then it will be the stock will show momentum towards 100-120 levels. Harsh, you have a query or anything to So share? I wanted to know on Jubilant Foodworks and about the agri commodities like soybean and wheat. If anybody can tell me about that. Harsh, about agro commodities, join in the next space. Ask to Vishal directly, or even before you, whenever I see you joining in, I'll ask Vishal to talk about agro commodities because he is expert in agro commodities like soya and everything. I don't track soya, and probably none of us do that. So he's the right person and the best person to answer about it. Okay, let me know about Jubilant Foodwork. Anyone of you tracking Jubilant? There was some management changes, but I think all these kind of news should be discounted. Everything is discounted. People will not stop eating pizzas. These are corrections that need to be used to bought into the stock for a longer period. Because this stock have been performing since its IPO days. It has never underperformed. It has only overperformed the market. It has outperformed the market as such. Ankit, Technically, you can look at Jubilant Food at 2300 to 2350 level to buy, because it's touching the 200 weekly exponential moving average. So 2350 could be the level to watch out for if you want to go long. Then even for long term also, then 2350 is the level to enter the long. Watch out for some reversal candle on daily chart, and you can go long with the low of that reversal candle around 2300 to 2350 zone. Okay, thank you, sir. Thank you. Can I ask my question? Please go ahead, Ashwin. Thank you guys for hosting the space.
तो सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है एंड मैं उस पे ट्रेड सेटअप्स बनाता हूँ अपने एंड मैं काफी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्कैनर जिससे कि मुझे जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं उनकी एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट की आईवी मिल जाए। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ स्कैनर कहीं पे जिसमें मुझे एट द मनी आप माई एफ एंड यूज कर सकते हैं। माई एफ एंड सॉफ्टवेयर में आपको एट द मनी, ओटीएम, आईटीएम सबकी आईवी आपको स्ट्राइक प्राइस वाइज दिख जाएगी। तो सर उसके अंदर सारे स्कैनर भी स्टॉक्स है, की स्कैनर एक साथ दिख जाएगा सर? स्कैनर भी है। आप उसमें ऊपर आईवी का फिल्टर डाल सकते हैं कि किसकी आईवी आप चाहते हैं, 19 के ऊपर हो, 20 के ऊपर हो, तो वो सारी स्टॉक स्पेसिफिक भी आप देख सकते हैं कि किसकी कॉल किया गया आईवी ऊपर है, और इंडेक्स के कॉल स्पोर्ट्स के भी देख सकते हैं। तो वो सर एटीएम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देता है या वो सबकी वेटेड एवरेज या क्यूमुलेटिव भी दिखाता है पूरे ऑप्शन नहीं, चेन वो की? स्ट्राइक प्राइस स्पेसिफिक दिखाएगा। स्ट्राइक प्राइस स्पेसिफिक दिखाएगा। हाँ, ओके, मैं चेक कर लूंगा सर एक बार फिर। थैंक यू सो मच। myfno.in। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। उसमें आप देख सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको 7 डेज का। तो No कौन worries, सा वो आपको दिखाता है, आई थिंक प्लैटिनम प्लान है उनका, कौन सा है वो आप देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Ankit, same is also shown by this iCharts also, and Opstra में भी आता है ऑप्शन अपने पास। तो आप सब ट्राई करो, आपको जो सूट करता है ना सॉफ्टवेयर। सी वी आर नॉट हियर टू प्रमोट एनी सॉफ्टवेयर। हाँ, प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, जो क्योंकि हम जो चीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जो हम वही बता सकते हैं, वही बता सकते। क्योंकि मैं उसके माई ज्यादा एफएनओ यूज करता हूँ, हो सकता है अमित भाई iChart यूज मैं करता iChart यूज करता हूँ, ऑप्सरा यूज करता हूँ। आप चाहिए तो ये इसका क्या नाम है उसका, ऑप्सरा नहीं है अपना, क्या नाम, यार नाम भूल गया मैं। जस्ट लेट मी चेक, आई हैव दैट सॉफ्टवेयर। जस्ट गिव मी मिनट। आप कॉन्सेप्ट भी यूज करते हो, कॉन्सेप्ट में बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। मतलब वी आर नॉट हियर टू प्रमोट, बट वी यूज दोस सॉफ्टवेयर्स फॉर आवर लर्निंग ऑल्सो, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर आवर ट्रेडिंग ऑल्सो। तो आप ऑप्सरा यूज कर सकते हो। आप देखो आपको कौन सा सूट करता है। एट द एंड ऑफ द डे इट शुड सूट यू। नहीं, थैंक यू अमित भाई। मैं एक्चुअली ऑप्स्ट्रा की तो सब्सक्रिप्शन भी लेके काफी ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ना आईवी का वेटेड एवरेज टाइप निकाल देता है। मुझे एटीएम का ही आईवी चाहिए एट द मनी। माई एफएनओ में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ठीक है, समझ गया सर। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो ना, तो डायरेक्टली उस कंपनी को लिख दिया करो, टैग करके, या उनको मेल भी डालोगे ना, दे विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स। राइट सर, मैं आई चार्ट्स भी एक बार चेक कर लेता हूँ, वो नहीं किया मैंने, और एक माई एंड एफएनओ। थैंक यू। माई एफएनओ नहीं, माई एफएनओ, MyFNO। ओके, perfect, thank you so much. See, there are 4 or 5 companies which we know. There might be many more companies. One is Opstra, second one is iChart, QuantSap is there, MyFNO is there, Sensible is there. Sensible भी है। हाँ, आप ट्राई करो, आपको कौन सा सूट करता है। मेरी पर्सनैलिटी जो मुझे सूट करता है, जैसा चार्ट मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर करके उनसे वो बहुत सारी चीजें चेंज करवाई, बनवाई, नया एडिशन किया, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए होती, मुझे मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना होता। तो हमने उनको सजेशन दिए, उनको सजेशन अच्छे लगे, उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी वो चीज, तो हमारी स्टडीज इजी हो गई। एज सिंपल एज दैट। हमें वो एक्सेल शीट में सब मगजमारी दिन भर बैठ के नहीं करनी होती, उन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग करी। आई एम नॉट अ कोडर, मुझे कोडिंग करना नहीं आता, मुझे मेरे लॉजिक समझ में आते इसके लिए। Yeah, Kaushal, go ahead. Sir. Thank you. Kaushal, go ahead. Thanks, Amit bhai. I'll just take 1 minute. Just wanted to share some regular promoter buying in some 3-4 companies that I've been noting. And from past experiences, when I've tracked these accumulations happening in these companies for a long time, if you buy and hold these stocks for about a year and a half, they tend to give some very decent returns. So I'll just quickly share some few names. To begin with, it's Som Distilleries. There's another company called International Conveyor. Prakash Industries is the third one. And fourth is... sorry, I think it slipped my mind. I'm forgetting the fourth one, sorry. No issues.
See what happens when a promoter is buying his own stake. It means that he has confidence in this company. He's looking into some very big picture. He is getting his stock at a very decent, cheap price, which he thinks is not the right price to buy. I had posted a HFCL insider buying at 13 rupees. 35, yes, And constantly हो रहा था. 13 rupees, not 35, 13 rupees. My pick was from there only because promoter were constantly buying. Every day they were coming into the market and buying that stock. And HFCL being my favorite stock for last almost 1.5 decade. Yeah. So even I went in and bought and I never sold it. Today it is currently quoting around say 75, 80. I don't remember the exact price. Yeah. So you need to be with the promoter unless promoter starts selling. Because promoter have taken in his own name. He might have taken in some Benami name also. मतलब मैंने मेरे नाम तो खरीदा ही खरीदा, मेरे फ्रेंड को बोल दिया भाई तू भी खरीद ले. तो हो सकता है उसमें कैसा है कि वो प्रमोटर को पता है भाई मुझे क्या गेम करना है स्टॉक में. प्रमोटर से ज्यादा तो हम कंपनी को जान नहीं सकते. प्रमोटर से हम चार्ट देखते हैं, वो चार्ट बनाते हैं, ये चीज याद रखना. तो उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तो उनके साथ खड़े रहो ना. बी विद द स्मार्टेस्ट मनी. हु इज द स्मार्टेस्ट मनी? जो प्रमोटर अपनी कंपनी का खुद शेयर खरीद के खड़ा है, चुपचाप खड़ा है. सी द करंट एग्जांपल इज ऑफ दिस आइडिया. प्रमोटर आर पंपिंग इन मनी इन अ डेप्ट लेडन कंपनी. इतना बड़ा डेप्ट है फिर भी वो पैसा डाल रहे 13, 13.5, 14 पे. आप प्रमोटर के साथ एक साल खड़े तो रह गए. देखो जब तक रिस्क नहीं लोगे ना तब तक रिटर्न नहीं आएगा. आप प्रमोटर के साथ खड़े रहो ना. प्रमोटर मूर्ख थोड़ी कि अपने 5,000 करोड़ रुपया कंपनी में डाल रहा है. उसके साथ खड़े रहो थोड़े टाइम. बी विद द प्रमोटर एंड सी व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स इट कैन जनरेट. Absolutely. Amit bhai, recollected the fourth one. It's the new listing, Nuvoco Vistas. उसमें भी एक महीने से कॉन्स्टेंटली 300 350 के भाव से धीरे धीरे माल लिया जा रहा है. आई थिंक इट हिट 390 टुडे, बट समथिंग रियली वर्थ लुकिंग एट. So, Kaushal, my request would be to share those datas, tag me, even I'll check that data. उसमें क्या दिखता है क्या नहीं दिखता चार्ट में. I'll share my studies with you. Okay. Over the weekend. Okay. I will do that for sure. I'll write these 4 down and then give you some bits. Yeah. This is a trader. Go ahead. And Yogananda, अगर आपका हो गया तो can I remove you so I can add other and we'll end it this space in next 15 minutes, 15-20 minutes max. Yes. कल भी ट्रेड करना है इसके लिए और कोई इशू नहीं. Yes. Thank you. This is a trader and or yeah, go ahead. This is a trader. Yeah. Hello, Amit sir. Sir, I had a question related to the data that you are sharing, the index participant-wise data and the stock participant-wise data. I'm not sure if you have already answered this, but how can we analyze this data for forming our views for positional trades वगैरह या फिर intraday, next day या next week के लिए कैसे इस data को use करके हम view form कर सकते हैं? Give me 2 minutes, I'll be back and I'll answer your question. तो उसमें आपको कुछ बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा कि हमें जो लगता है ना वो होता नहीं है. एक्चुअल पिक्चर कुछ अलग चल रही है. Just give me 2 minutes, I'll be back. Just give me 2 minutes. Sure, sir. In the meantime, Sahib or Yogananda ji, Pushparaj, in case you want to share something or ask queries, we have Ankit, Trendonomics. Yeah, Well, hi. thank Am I you so audible? much. I'm quite happy with how you explained it. But at the same time, what I've been reading is about oil being, rationed in the European countries. All these are a lot of negative pointers which could go on for a long time to come. Yes, in India, we are more stable, but I don't know how these are going to affect the market. Are we going to have a sudden dip in the market? That is my doubt. I just wanted some comments from the people who are speaking. And with this, I would close. I'm quite happy with your answers. Thank you. Ankit, sir, would you like to take this question? See, if the oil is hovering around $100 and it is priced in, so if it does not cross the recent high of $129, so you might not see sudden dip what you are expecting. Obviously, inflation is a concern,
but a sudden dip will be ruled out until unless oil WTI crude oil crosses its recent high. It can remain in a range of 100, 105, $110, and finally, let's hope the war ends and it will again fall back to 80, 75, $80. So sudden dip is ruled out, but other the price rise in other commodities and ripple effects of higher crude prices if inflation hits the RBI or is out of RBI comfort zone, then you can see a gradual fall in markets. Because this, I think, this quarterly results will not show the impact of uh, 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 will not show a major impact of shrinking of margins in companies' result. Maybe next quarter will be more crucial to watch. So I don't think you will see a sudden dip, but there could be a consolidation. So Nifty might consolidate between 16,000, 16,500 on the downside and 18,000, 18,300. So you could see more consolidation, but a sudden dip breaking the recent low of 15,600, I think is ruled out, only due to crude oil. So I'll take one now. So see, everybody is seeing crude prices and thinking that results will be bad. Market is much smarter than what we think. Market tries to discount the things as soon as possible. Analysts, when they put up their Excel sheets, they try to discount everything possible. They try to figure out this is the best possible scenario that can happen over a stock, which might be affected due to it. Inflation thing is already discounted in that inflation will come to this level. If we see inflation data, it might be very high, and reacting to that is the most stupidest thing that we can do as a trader or even as an investor. क्या हम वो इन्फ्लेशन का डेटा देख लेंगे और इन्फ्लेशन अरे इन्फ्लेशन तो आएगा ही ना. अगर हमारा क्रूड का प्राइस ही ऊपर हो गया तो इन्फ्लेशन का डेटा इफेक्ट करेगा ही. पर वो डेटा को हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं. आज की प्राइस हम सोचेंगे 3 महीने बाद रिजल्ट में दिखेगा, वो आज ही डिस्काउंट करके मार्केट बैठ रहा है कि भाई ये खराब चीजें तो मैंने पकड़ ली और खराब चीज लेके आई इससे. यस, व्हाट अंकित सेड, आई विल ऐड टू इट कि भाई अगर 130 भी क्रूड तोड़ देता है और 160 170 जो भी हो, कोई 200 बोलता है, कोई 300 बोलता है, अगर वहां चला जाता है तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा. फिर मार्केट गिरेगा ही. फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई. जो कंपनियां उस सेक्टर में है, क्योंकि सबको लास्ट में जो भी बना रहा है, अनलेस इट इज एन आईटी कंपनी, अपनी पर्सनल पॉकेट पे इफेक्ट करेगा यार. बाकी सब चीज छोड़ दो. हम जो ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं, सेविंग करके कुछ भी करके, अगर हमारी पॉकेट से ही रोज 1000 की जगह 1500 रुपए का पेट्रोल का प्राइस जाएगा तो हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, या हमें ट्रेडिंग के लिए जो कैपेसिटी नहीं कर पाएंगे. तो बहुत कॉमन सेंस तरीके से सोचो कि वो हमें भी क्या इफेक्ट कर रहा है. कंपनी को तो कर ही कर रहा है, हमें क्या इफेक्ट कर रहा है. अगर हमें भी इफेक्ट कर रहा है, कंपनी को इफेक्ट कर रहा है और हम उसको डिस्काउंट करके बैठे कि नहीं भाई ये तो होना ही है. जब हम सैलरी इंक्रीमेंट की भी बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं ना कि सर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, मेरा पगार तो इतना कम से कम बढ़ा दो कि भाई घर का खर्चा जो हम पहले सेविंग थी उतना तो निकल जाए. तो ये कॉमन सेंस तरीके से भी लेके चलोगे ना तो सॉल्यूशंस बहुत सारे मिल जाएंगे. अननेसेसरी उसको सोच के बैठ जाए कि इससे मार्केट गिर जाएगा, ये होना होगा. मार्केट को गिरना होता 1500-600 भी नहीं टिकता, सीधा 12,500 या 13,000 आ जाता. बट वहां से भी सब बैड न्यूज होने के बाद भी मार्केट इज ओनली 1,000 पॉइंट अवे फ्रॉम इट्स लाइफ हाई. सो व्हाट डज इट सजेस्ट कि प्राइसेस आर ट्राइंग टू डिस्काउंट एवरीथिंग बैड पॉसिबल एज ऑफ नाउ. कल सुबह क्या होगा हमें नहीं पता. इट इज ओके साहिब. हेलो. Yes, you're audible. Yeah, I think yeah, it's a good answer. Thank you. Okay, now coming to decisive trader, your question. What about how to interpret the data that I have daily put in? Now go and check it from the day 24th February. What was happening? Who was the smartest money? Retail was the smartest money. That client category. Client category we consider as retail, but it is not purely retail. It is corporate accounts also, which are not listed as a prop account. Prop account is someone who directly holds a NSE license और अ बीएससी लाइसेंस. दे आर कंसिडर्ड एज प्रॉप ट्रेडर्स. अब आप उसमें स्मार्ट ट्रेडर को ढूंढना है आपको कि भाई मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है. दिस टाइम क्लाइंट वाज ड्राइविंग द मार्केट. क्लाइंट वाज कंटिन्यूअसली बाइंग ऑल द डिप्स. क्लाइंट वाज कंटिन्यूअसली होल्डिंग ऑन टू देयर पोजीशन. उसने
कहाँ से पैसा चुकाया भगवान मालिक है। उस सबका एमटीएम भी भरा रहेगा जब उसको लॉस आया, बट अब उसने बेचना शुरू कर दिया। कहाँ 17,500 17,600 के लेवल पे। क्लाइंट नीचे जब एफआईआई 5,000 करोड़ का रोज माल बेचता था, उसने क्या किया, वो बेचारा खरीद रहा था। क्या हम ही है क्लाइंट, और कोई नहीं है। क्लाइंट आप जैसे मेरे जैसा इंसान है, जिसको लगा नहीं भाई यहाँ तो खरीदने का है। इतने बड़े कॉर्पोरेट्स आ गए होंगे कि नहीं भाई हमें इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट दिखती, हम खरीद के जा रहे। दे वर द स्मार्टेस्ट पीपल। ठीक है, प्रो ट्रेडर होता है, प्रो कभी बेच देता है कभी खरीद लेता है, वो आधी रात को अपना पोजीशन बदल देगा। वो हेज करके बैठा है क्या करके बैठा है, वी नेवर नो। सो फाइट तो दो की है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर की जो एफआईआई है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर की जो अपन लोग है। एफआईआई पूरे शॉर्ट में फंस के गया। आप पूरा डेटा चेक करो, पूरा उसमें कैलेंडर दिया हुआ है कि भाई एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई हर लेवल पे शॉर्ट करता चला। हो सकता है अपनी पोजीशन के अगेंस्ट हेज करके जा रहा हो, बट क्लाइंट क्या कर रहा था, क्लाइंट हर जगह एडिशन ही कर रहा था अपनी पोजीशन को। आज क्लाइंट को लगा था, आज पहली बार क्लाइंट नेगेटिव आया है इंडेक्स पर। स्टॉक पे व्यू देना बहुत टफ हो जाता है कि भाई वो स्टॉक वाइज पार्टिसिपेंट का जो डेटा आता है ना, क्योंकि उसमें इतने के स्टॉक्स है, क्या पता करेंगे। इसमें तो अपने को पता है ना भाई, दो इंडेक्स है जो ट्रेडेबल है एफ में, निफ्टी बैंक निफ्टी। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे भरी के क्लाइंट्स ने खरीदा, ऊपर आया उनका लेवल आया, जो भी उनके टेक्निकल के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, XYZ क्वांट के हिसाब से कुछ भी लगाया रहेगा, दे हैव मेड मनी। एंड सी व्हाट हैपेंस इज, ओवर अ पीरियड ऑफ से लॉन्गर पीरियड से 12 महीने का पीरियड है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि क्लाइंट मतलब अपन लोग हमेशा पैसा ही कमाएंगे। Forget that myth that clients are always here to lose money. Clients are over here to make money also. कोई टेक्निकल से कमाएगा, कोई क्वांट से कमाएगा, कोई ऑप्शन सेलिंग करके कमाएगा, कोई ऑप्शन बाइंग करके कमाएगा। तो हर का अपना अपना स्टडीज है जिसके बेस पे वो डेटा डिराइव हो रहा है। तो आप ये देखो कि भाई अगर ये फॉर एग्जांपल मार्केट गिरना शुरू होता तो कौन स्ट्रॉन्गर पार्टी चल रही है उस टाइम पे, कंटिन्यूसली उस डेटा को रोज स्टडी करोगे ना कि हाँ भाई ये खरीद रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बेच रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, इसी के हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो उसको उस तरीके से स्टडी करना शुरू करो। सिर्फ एक दिन का डेटा देख लेने से काम नहीं बनेगा। आई हैव दिस डेटा फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। जब से ये डेटा आना शुरू हुआ ना, तब से मैं वो डेटा मेरे पास मेंटेन है। तो ये पता लगता है कि भाई 6-8 महीने एफआईआई जीत जाएगा, 3-4-5 महीने बचे हुए क्लाइंट जीत जाएंगे। इसका एक और कारण है, अगर आपने वो कैरेट और ये गधे वाली स्टोरी पढ़ी रहेगी, अगर फॉर एक सिंपल पकड़ लो, अपन गली क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं हमेशा बैटिंग करता रहूंगा, आपको बोलूंगा बस आप बॉलिंग करते रहो, तो आप गेम खेलने आओगे क्या? आप बोलोगे भाई मुझे तो खेलना ही नहीं, मुझे भी तो बैटिंग करनी है। तो इतना एक सिंपल गेम समझ लो कि भाई उसको भी मौका दे रहा है, तू कमा, मतलब अपने को मौका दे रहा है कि तो आप भी कमा लो, पैसा कमा लो, थोड़ा मजा करो, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, आप कमाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप और नया पैसा भी लेके आओगे। सो उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करो, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस के भाई क्या पोजीशन चल रही है। एक महीने पहले ये पोजीशन थी, एक महीने बाद ये पोजीशन है, एक महीने पहले निफ्टी कहाँ था, एक महीने बाद निफ्टी कहाँ है, बैंक निफ्टी कहाँ है। वो डेटा समझ में आया कि भाई लूजिंग पार्टी कौन है, फंसा हुआ कौन है। जो फंसा हुआ पार्टी है ना, वो पहले पैनिक करेगा, उसके अलावा कोई पैनिक नहीं करेगा। फंसा हुआ इंसान पैनिक करता है कि भाई लॉस काट, बाजार से निकल जाते हैं। ओके, डिसिसिव ट्रेडर, होपफुली आई हैव आंसर्ड, क्योंकि मैं यही चीज देखता हूँ भाई, फंसा हुआ कौन है, जो फंसा हुआ है ना, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। Okay, sir. I personally also tried to analyze this data, but I was unable to do that. I'll track it every single day. अभी कुछ महीने तक track करता हूँ, and if I have any other query, I'll ask you. Thank you. Yeah, Gopal, go ahead. Hi guys, good evening. So very soon we'll be getting into the result season, say another 10 days. So if I were to make a position on sectors or stocks based on expectation of results, which one could those be? Sectors or stocks? Say for example IT. We are talking about inflation, input cost. तो क्या IT would be the sector जहाँ पे अगर position लेके रखे तो it might give some returns in April, May? Ankit, go ahead if you can answer, because I don't track result season as such. रिजल्ट सीजन में जो मुझे सेक्टर लग रहा है अच्छा जो चलना चाहिए वो मेटल्स ही है। मेटल्स के रिजल्ट अच्छे ही आने चाहिए कंसिडरिंग द प्राइसेस, और आईटी भी ठीक ठाक ही आएगा, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आएगा, जितना एक्सपेक्टेशन होती है उतना ही आएगा। आप देखेंगे रिजल्ट के बाद
जनरली आईटी स्टॉक्स ने हाई बनाते हैं और फिर एक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो इन रन अप टू रिजल्ट सीजन इनकी आई थिंक कैन मेक और एटलीस्ट रीटेस्ट द प्रीवियस हाई। तो आईटी के जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे, मेटल्स पे मैं बुलिश हूँ, मेटल्स के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। तो मेटल्स एज अ सेक्टर यू कैन वॉच आउट। Yeah, Pushparaj, you have any question or any views? Yeah, okay, Ankit bhai, thank you so much. Sir, my question is for about F&O data. Sir, how to interpret it? मैं 2 मिनट पहले आपको बोला, जो मैं डेटा पोस्ट करता हूँ उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ सर, एग्जैक्टली 2 मिनट पहले तो मैं बोला यार, 2 मिनट पहले मैं वही बात कर रहा था। F&O का डेटा देखो, अलग अलग डेटा रहता है। ये मैं क्लाइंट वाइज और स्टॉक वाइज पोजीशन करता हूँ। F&O का OI का डेटा रहता है, F&O का IV का डेटा रहेगा, F&O का HVIV का डेटा रहेगा। F&O का इतना डेटा आता है ना, आप कितना डेटा एनालिसिस कर लोगे? लास्ट में एक सिंपल प्राइस एक्शन भी फॉलो करोगे ना, एंड यूज दीज डेटा पॉइंट्स एज फिल्टर, नॉट द डिसीजन मेकिंग ट्री। मतलब ये फिल्टर्स होने चाहिए आपके, कि ये मेरा फिल्टर्स ऐड हो रहे हैं, इन फिल्टर्स के थ्रू मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं 1 दिन 2 दिन वेट करके देखूंगा कि ट्रेंडिंग में कौन पावरफुल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे उस पावरफुल के साथ खड़ा रहना है। अपन करने वाले 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट मैक्स करेंगे। इतना ह्यूज मार्केट है, 8 करोड़ डीमैट खुल चुके हैं। 8 करोड़ में से 2 या 3 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हो चुके हैं। एक्टिव में से मैं बोलता हूँ 50 लाख रोज ट्रेड करते रहेंगे इंट्राड वाले। तो उस 50 लाख के साथ अपन खड़े रहना क्यों? वो किसके साथ जाए उस डेटा को ऐसा पकड़ के कि हम उसको उल्टा ही डेटा पकड़े? हम उसके साथ जाए ना जो पावरफुल और जो उस टाइम को मार्केट को ड्राइव कर रहा है, तो उसके साथ खड़े रहो। यही मैं समझा रहा था। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो उसमें लास्ट पार्ट सुन लेना, because I'm ending the session as such. So I've explained it very clearly how to interpret those data. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Okay, So with let's this, take the last question from Saib and before we end this space. yeah, sure. Hi, sir. Am I audible? Yes. ओके सर, अंकित जी से मेरा एक सवाल है ऑप्शंस के रिगार्डिंग। एक्चुअली मैं अपने 2 ट्रेड के बारे में बोलूंगा और हाउ टू डिफरेंशिएट दोस्त की कौन से स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना है। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड था HDFC के ऊपर। मैं 3 दिन से उसका एक स्प्रेड कैरी कर रहा हूँ अप्रैल सीरीज का। आज मैंने क्लोज किया। मैंने क्या किया था, मैंने 2300 का अप्रैल सीरीज का कॉल बेचा था और 2400 का 2 लॉट खरीदा था। तो मेरा नेट ऑन नेट डेबिट था। मैंने कॉल बैक स्प्रेड बनाया था, स्लाइटली डेबिट था 5-6 रुपीज का। तो वो अच्छा मूव दिया। बट एंड ऑफ द डे आज जब मैंने काटा सुबह 1-1.5% ऊपर था, तो मेरा जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो 20,600 रुपए दिखाया और जो लूजिंग पोजीशन है वो 18,000। मतलब इतना अच्छा मूव कैप्चर करने के बाद भी मुझे सिर्फ 2600 मिला। ये गया एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड था ONGC का मार्च सीरीज का। उसमें क्या किया, नॉर्मल एक सेकंड पहले ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आपने 2300 का सेल किया था और 2400 के 2 बाय किए थे ना? हाँ। तो आपका अप्रैल सीरीज का ऑप्शन था। हाँ। तो आपको वेट करना चाहिए था। अगर सिर्फ ऑप्शंस देख के आप ट्रेड, मतलब स्ट्रेटेजी आपने सेट कर ली, ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपने सेट कर ली, स्ट्राइक प्राइस चूज कर ली, सब कर लिया, लेकिन थोड़ा सा आपको व्यू भी देखना है। देखो आपने 2400 का 2 कॉल लिया है, तो अब 2400 के ऊपर जाएगा और तभी तो आपको मेजर प्रॉफिट होगा ना। हाँ सर, वही मैं बताने वाला था। आज का हाई 2428 है। और अगर आप थोड़ा सा चार्ट रीडिंग आपको आती है ना, बहुत बिल्कुल डीप नहीं जाना, अगर आपको थोड़ी सी चार्ट रीडिंग आती है तो हर बार स्टॉक अगर आप देखोगे तो 2450 2480 इस जोन से वापस आ रहा है। तो आपके पास टाइम भी बहुत था, क्योंकि आपने अप्रैल सीरीज का लिया तो आपने सीरीज भी सही सेट करी, मार्च नहीं थी एटलीस्ट। तो अप्रैल में आप इसको वेट कर सकते हैं। हाँ सर, नहीं मैं एक्चुअली मैं अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस करना है वही समझने के लिए मैं आपको दूसरा स्ट्रैटेजी ठीक है, बस पेशेंस चाहिए। और थोड़ा सर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है और कहना ही। हाँ, स्ट्रैटेजी ठीक, स्ट्रैटेजी में कोई खराबी नहीं कि आपने 2300 का कॉल वो कर दिया, अगर भाग जाए तो 2400 में उधर भी आपको डबल कॉल है।
ठीक है, आपने बाय कर रखा है, तो लेकिन आपको थोड़ा सा चार्ट देख के हाँ वो थोड़ा सा व्यू रेजिस्टेंस था इसीलिए निकला, मैं बता रहा हूँ। मैं बट दूसरा जो ट्रेड इसमें था, आपका कोई टाइम डीके नहीं था, मतलब हाँ कोई टाइम ऐसा डिके, नहीं हाँ था, अप्रैल तो सीरीज आप इसीलिए वेट कर लिया सकते गया थे। था। हाँ, तो आप वेट कर सकते थे। हाँ उसमें सर क्या है ना कि मेरा ओटीएम्स मतलब जो दूर का स्ट्राइक है वो बाई किया हुआ है, तो अगर मार्केट एक दिन दो दिन भी रेजिस्टेंस पे आके कंसोलिडेट भी करेगा ना, तो हाँ, ओटीएम का वो क्विकली डीके हो जाएगा कंपेयर टू जो मैंने सेल किया हुआ है, क्योंकि वो तब तक आईटीएम बन चुका है। तो नहीं, वो इसीलिए डीके होता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ एक्सपायरी, लास्ट हाँ वीक। अभी तो 1 अप्रैल है कल, आपने हाँ, बट सर वो एक एक डायरेक्शनल मूव जब खत्म हो जाएगा, वो वहां पे कंसोलिडेट करने लगा, तो आईवी का ड्रॉप होने की वजह से भी तो थोड़ा सा तो उसमें ये आपका आए। डेबिट स्प्रेड है, आप खुद ही कह रहे हो, मतलब 5 रुपए से ज्यादा तो नुकसान नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं, वो बीच में अगर फंसा रहेगा सर तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें ना, बीच का लूजिंग हिस्सा यही बहुत बड़ा होता है। यही मैं बोल रहा हूँ कि वो 2300-2400 का आपका रेंज है, ठीक है, और हाँ वो हाँ स्टॉक का रेजिस्टेंस भी 2400 ही है। अगर वो हाँ 2400 क्रॉस कर लेता है तो आपको हाँ प्रॉफिट भी तो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपकी एक कॉल शॉर्ट है और 2 कॉल प्लस है। हाँ 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 वो है सर। मैं दूसरा इसीलिए मैं बताने जा रहा हाँ, था आपको। बताइए दूसरा बताइए। था वो मार्च सीरीज का ओएनजीसी का, मैंने हम्म नॉर्मल डेबिट बनाया था। वो उस टाइम ओएनजीसी 170 के नीचे ही था, तो मैंने नॉर्मल जैसा करते 170 का कॉल लिया और 175 का कॉल बेचा। अब हम्म मैं दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो पहला वाला जो ओएनजीसी का सीन था ना, उसमें भी मुझे 4-5% मूव में कैप्चर किया। तो हम्म उसमें देखा कि दोनों ऑप्शंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम्म वो जो मेरा बाइंग ऑप्शन है उसमें लगभग 30-35 हजार का प्रॉफिट है, और हम्म जो सेलिंग पोजीशन है दूर का वो इन हम्म टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और नेट हम्म ऑन नेट मेरा सिर्फ 1,500 या 2,000 ही प्रॉफिट आया। ठीक है, हम्म उस टाइम मैं सोच रहा था कि अगर इसके जगह पे मैं उसको ये मतलब कब बुल बनाया कॉल था स्प्रेड आपने? ना, हाँ बुल कॉल ओएनजीसी के जगह पे मैं अगर उसको मतलब ये बनाता, बैक स्प्रेड बनाता, तो उसमें बहुत ज्यादा गेन आता। तो इसी में मैं, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि दो स्टॉक को मैं देख के कैसे हाँ, आइडेंटिफाई, दोनों में मैंने परसेंटेज वाइज सेम मूव कैप्चर किया। एचडीएफसी में मैं जितना मूव कैप्चर किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, शायद ओएनजीसी में उसे कम ही मूव कैप्चर किया था, बट स्टिल देखा कि ओएनजीसी में अगर बैक स्प्रेड बना तो ज्यादा पैसा था। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए देखो स्टॉक ए और स्टॉक, ओएनजीसी में न्यूज भी थी, एफपीओ ओएफएस की, तो हाँ आपने कब बनाया था ओएनजीसी? नहीं वो मार्च के स्टार्टिंग में था। वो तब जिस दिन वो 12-13% बढ़ा उसका बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले हाँ ही, मतलब वो मूव में मैं नहीं था। उससे पहले वाला एक दिन में वो नॉर्मल 2-2.5% 3% का कुछ मूव था, तो हाँ, उसमें वो गेन होगा। तो मार्च सीरीज के स्टार्टिंग में था। तो तो अब मेरा, 7 मार्च को जब ये 13% भागा था, उससे पहले ही आप निकल गए थे? हाँ 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 वो उससे पहले एकदम मार्च सीरीज के कुछ स्टार्टिंग में ही होगा। वो मूव में मैं था हाँ, ही नहीं। अच्छा, वो मुंह में नहीं थे तो पहले ही आपने बेच दिया। हाँ हाँ, तो हाँ, मैं तो वही हो मेरा सकता है सवाल आपने था नीचे, कि, नहीं देखो, स्ट्रेटजी दोनों ही ठीक, कोई स्ट्रेटजी खराब नहीं होती, मूवमेंट के ऊपर होता है कि आप किस टाइम ऑफ एक्सपायरी पे वो स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है। तो हाँ जैसे सर आपने एक एचडीएफसी की आप एक आ, आ, ऑप्शन के कुछ ग्रीक्स या आईवीज देख के क्या पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बैक स्प्रेड के थ्रू जाना चाहिए, या फिर उसमें नॉर्मल जो 1:1 स्प्रेड उससे जाना चाहिए, वो क्योंकि अभी वो, स्पेसिस पे पूरा अंकित समझाना मुश्किल है। अंकित हाँ मैं एक सेकंड में समझाता हूँ इनको। हाँ हाँ, सर बताओ। आप एक काम किया करो, हाँ फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ हाँ हाँ। नेकेड जाओ, अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है तो नेकेड जाओ, ठीक है। नहीं सर, मैं एक्चुअली पोजिशनल करता हूँ, तो इसीलिए हाँ कभी तो नेकेड नहीं पूरी करता। बात तो ओके, सुन लो। ठीक है, और ओके ओके 170 ओके। 175 का मत करो, 170 190 का करो, या 170 185 का करो। एटलीस्ट 10% का उसको स्कोप दो, अगर आपका डायरेक्शनल व्यू चल रहा है तो। उस टाइम आप स्प्रेड बनाओ, एक नॉर्मल स्प्रेड, नॉट रेशियो स्प्रेड, ना बैक स्प्रेड बनाओ उस टाइम पे। 15 तारीख तक आ जाए ना, 12-15 तारीख तक आ जाए, 12-15 तारीख तक जब भी आ जाए, उसके बाद आप है ना उसको स्प्रेड बनाओ, छोटा वाला स्प्रेड। 15 तारीख के बाद क्या है, 15 तारीख के बाद क्या है, नहीं अभी 1:2 बनाना ही नहीं है। ओके ओके, पंद्रह स्प्रेड तारीख डिफरेंस घटाना है, ओके गॉट हाँ, इट, और डिफरेंस 15 के बाद आपको क्या करना है कि तब आप देखो कि भाई उसमें अगर कंटिन्यूस मोमेंटम चल रहा है, नेकेड खड़े रहो। वो भी 2 या 3 दिन के व्यू से कि भाई 2-3 दिन में मुझे निकलना है, जैसे जैसे मुझे आएगा मुझे ऊपर उसको रोल ओवर करते चलना है। थर्ड थिंग, लास्ट वीक में जब आ जाए, क्योंकि अभी फिजिकल सेटलमेंट होता है, लास्ट वीक हाँ में आ जाए तब रेशियो मारने जाओ। फर्स्ट वीक में रेशियो मत मारो आप, फर्स्ट वीक में रेशियो मारोगे पक्का डिजास्टर स्ट्रेटेजी है ये। फर्स्ट वीक में नेकेड जाओ अगर आपका डायरेक्शनल व्यू चल रहा है तो। सेकंड वीक में
स्प्रेड बनाओ, नॉर्मल स्प्रेड। लास्ट वीक में आते आते मतलब लास्ट के 7-8 दिन बचते तब उसमें थीटा डीके अच्छा आता है। अब अगर उसका आईवी हाई चल रहा है, आप आईवी जाके कंपेयर करो कि भाई आईवी बढ़ रहा है कि घट रहा है कंपेयर टू एचवी, ठीक है, तब तो जाके पैसा बनेगा। अगर ऐसा फर्स्ट महीना स्टार्ट होते ही आपने 170-175 का बैक क्या कहते हैं रेशियो स्प्रेड बना दिया ना, पैसा नहीं बनेगा अगर गलती से आपके उल्टा चला गया तो। तो वही मतलब मेरा 6% का मूव कैप्चर करने के बाद भी वही तो नेकेड जाओ। अगर आपका डायरेक्शनल व्यू अच्छा है तो नेकेड जाओ। मैं डायरेक्शनल व्यू लेके चलता हूँ, मैं नेकेड कॉल बाय करके जाता हूँ। अच्छा, नेकेड बाय करो फर्स्ट ये स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी में थीटा डीके से मत डरो, उतना इम्पैक्ट नहीं थीटा होता। डीके नहीं आएगा, कुछ नहीं है थीटा डीके उस टाइम पर। उस टाइम आपको उससे देखो, आपको थोड़ा ग्रीक का बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा, थोड़ा ग्रीक्स पढ़ो कि ग्रीक कैसे इम्पैक्ट करता है नहीं तो करता है। थोड़ा बहुत वो आता है सर, बट वो ऑप्शन मतलब स्ट्रेटेजी बनाते टाइम मैं इसी में कंफ्यूज था कि बैक आप स्प्रेड एक काम करो, कुछ मत करो, ओएनजीसी भूल जाओ, एचडीएफसी भूल जाओ, आप निफ्टी पे 6 महीना उस चीज को ट्राई करो। सिर्फ निफ्टी पे, बैंक निफ्टी भी मत करो, निफ्टी पे 6 महीना अपनी स्ट्रेटेजी ट्राई करो, देखो पैसा बनता है कि नहीं बनता। उसके बाद किसी स्टॉक पे जाना, क्योंकि स्टॉक में कुछ भी मूव आ सकता है। स्टॉक एक दिन में 20% गिर सकता है, स्टॉक एक दिन में 50% भाग सकता है। तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्राई करो, फिर उसके बाद एक एक स्टॉक पे स्पेसिफिक जाते रहो। उसके पहले ये चीजें मत करो इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, ठीक है। And this space was not for discussing all these option strategies, क्योंकि ऑप्शन इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना। अगर एक आईवी भी लेके बैठेंगे ना तो 4 घंटे हम लोग बोलते रहेंगे, आईवी खत्म नहीं होगा। एक सिंपल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी लेके बैठ जाएंगे, स्पेस खत्म नहीं होगा। कल सुबह वापस उठ के अपने को वही करना है जो अपन करते हैं, ठीक है। So with this, Jai Hind, I'm ending this space.